Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm from Darul Hikam School, Banigala campus, and I'm your science teacher. Today your lecture number 7, and the topic of our lecture is classification of living things. So students, open your workbook, page number 44. Put these, first of all, I mentioned date and day. Put these in order, discuss with your classmates. विच इज़ द बिगेस्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट. ठीक है, आपने इसको बिगर से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है. देखें, ग्रास होपर, कॉकरोच, बटरफ्लाई, एंट और फ्लाई, इनमें से कौन सा सबसे बिगेस्ट है? इट्स बटरफ्लाई इज़ द बिगेस्ट, देन ग्रास होपर, देन कॉकरोच, देन फ्लाई एंड देन एंट. विच इज़ लॉन्गेस्ट, विच इज़ शॉर्टेस्ट? अर्थवॉर्म, बूटलेस वॉर्म, हुकवॉर्म एंड नेमाटोड्स. मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था कि बूटलेस वॉर्म जो है वो बहुत ही उसकी लेंथ वो बहुत ज़्यादा होती है. सो बूटलेस वॉर्म इज़ द लॉन्गेस्ट, देन हुकवॉर्म, देन अर्थवॉर्म एंड देन नेमाटोड्स. नेमाटोड्स आर वेरी स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स. विच इज़ क्वाइटेस्ट, विच इज़ नॉइजेस्ट. आपने क्वाइटेस्ट से नॉइजेस्ट की तरफ जाना, यानी कि सबसे क्वाइट इसमें से बीटल होती है, देन फ्लाई, देन मॉस्कीटो, then bee and then cricket. Which is the softest and which is the hardest? Okay, ladybird, beetle, dragonfly, butterfly and ant. So softest is the butterfly, I think. Softest is the ant. So students, ant is the softest, then ladybird, butterfly, beetle and then dragonfly. On the next page, find all of these invertebrates in the grid below. Which one are insects? Ant, bee, snail, spider, earthworm, anemone, beetle, butterfly, cricket, dragonfly, fly, grasshopper, cockroach, slug, crab and jellyfish. ठीक है, आपने you have to do it by yourself. आपने खुद इन सारे सब के नाम इस पज़ल में आपने फाइंड आउट करके इनको सर्कल करना है और फिर बताना है कि इसमें से इंसेक्ट कौन कौन से हैं. Don't forget to mention date and day on every page. Okay, so in the previous page, insects were ant, cricket, dragonfly, cockroach, bee, beetle, spider, butterfly and grasshopper. These are insects. Draw and label structure of insect. Structure of insect from workbook from book page number 38. So here is the structure of insect. ठीक है, you can copy from here. ठीक है, आपने ये स्ट्रक्चर बनाना है इंसेक्ट का ऑन योर वर्कबुक पेज नंबर 46. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 48. mention date and day also. So what animals group does it belong to? Use the given information to fill the table. So features are legs, tail, gills, scale, skin, fur and lay eggs. And animals are axolotl, fish and amphibians. Legs, yes, axolotl has legs, fish don't have, amphibians yes. So tail, axolotl yes, fish yes, amphibians yes. Gills, axolotl yes, fish yes and amphibians don't have gills. Okay. Scales, axolotl has scale on it, yes, fish yes, amphibians no. Skin, axolotl yes, fish no and amphibians yes. Fur, axolotl yes, fish don't have furs and amphibians don't have fur. Lays eggs, yes, axolotl lays egg, fish also lay egg and amphibians also lay eggs. The axolotl is amphibian because of their ability to grow up and leave the water. ठीक है, you have to write it the reason. Short questions. Name 2 mammals that live in the water. Whale and dolphin. Name 3 invertebrates that live in the sea. Snail is an invertebrate, starfish and earthworm. Now on page number 49, mention also date and day. Name 5 invertebrates that could be living in a garden. Garden के अंदर कौन से invertebrates होते हैं? Ants, bees, grasshoppers, butterflies and earthworm. Name 3 invertebrates that have more than 3 pairs of legs. जिनके more than 3 pairs of legs होते हैं. उन invertebrates के नाम क्या हैं? Scorpion, water spider and
garden spider. Which insect is a pest? Are there any in your house? ठीक है, कौन कौन से पेस्ट होते हैं? यस, मॉस्किटो, फ्लाइज, कॉकरोचेज, बुकवॉर्म, क्रिकेट. यस, आपके घर में कौन सा पेस्ट है? यस, मॉस्किटोज सबके घर में आते हैं, फ्लाइज भी होती हैं. ठीक है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ. ओके, दिस इज़ योर टास्क. You have to do it by yourself. Page number 50. Choose the correct answer. Also mention a date and day. Choose the correct answer. You can also do it. ठीक है, आपने पढ़ा है रीडिंग के अंदर, आप ये कर सकते हैं. So you have to do it by yourself also. Okay. I hope you understand. So fill your workbook pages. I have told you in the video. Take care of yourself. Allah Hafiz.